Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Strategy of Industrial Growth from 1947 to 1940. हम वही सीरीज कंटिन्यू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज। अभी तक बेटा हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके फीचर्स ये डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी जो हमने फॉलो की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी फॉलो की उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, जो उसके साइलेंट फीचर्स हैं, जो हमारी इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो हमारी पॉलिसी हमने यूज़ की, फॉर्मुलेट की आईपीआर के थ्रू, उसमें क्या क्या उसके मेन फीचर्स है। फर्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखो, मैंने बेटा आपको पहले करवाया जब मैंने आईपीआर आपके साथ डिस्कस की है, उसके बीच में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उसके हमारे जो आईपीआर 1956 हमारी हमने बनाई थी, उसके बीच में मेन यही था कि 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगी। मींस पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ये बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी ग्रो भी करे, हमारी इनकम भी ग्रो, नेशनल इनकम राइज हो, साथ के साथ सोशल वेलफेयर भी हो। सो अब जो हमारा दिस मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग का, वो तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट द पब्लिक एंटरप्राइजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। दे डू वर्क in such a manner so that all the people living in the society, living in the economy, they are treated at par. They are treated as a similar person. Neither they are rich, either or they are poor. अमीरी गरीबी उसमें नहीं देखी जाती, सबको सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्रोवाइड की जाती है। सो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसके लिए बेसिकली क्यों इन्होंने रोल प्ले किया, सो डैट ऑल गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन द इकोनॉमी, दोज पीपल हु आर पुअर। क्योंकि जब हमारी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड इंडिया वाज नॉट अ रिच इकोनॉमी, इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, poverty was a main feature of this economy. So at that time the private government plays an important role in setting up the industries in public sector, so that each individual gets each and every commodity and good produced in our country. जो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्रीज थी, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, पावर होगी, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर all the heavy industries. No industry can run without power, and no industry can run without iron and steel. So these industries are of strategic importance, significant importance, and these are kept under the purview of a public sector. ठीक है, that is why public sector plays an important role in the process of industrialization. Secondly, private sector enterprises plays a secondary role in the process of industrialization under permit license raj. ये बच्चे हमने जब आईपीआर 1956 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है था, तब मैंने आपको बताया कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर मींस पब्लिक सेक्टर को मेन प्रायोरिटी दी गई थी, कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर के लिए रख दी गई थी, और बाकी जो थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन गो अहेड विद दैट. So in that case, private enterprises, हर कोई, it was not easy for everybody to enter into the industrial field to set up an enterprise industry and start the business. So in IPR what happens, there was a permit industrial licensing policy that laid guidelines for the industries, private entrepreneurs, to get their license for not only for setting up the industry, but also for if they want to expand their existing
production capacity. So private enterprises played a role, but they played a secondary role in the process of industrialization. Now beta, if 1 mark question or MC question comes, public sector enterprises plays an important role in the process of industrialization or private or both, like the options will be different. So you have to write अगर उन्होंने बोला significant role, that is your public sector, और अगर उन्होंने लिखा है या primary role, that is your public sector, और अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सेकेंडरी रोल किसने दिया किया है, दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो जो मेन रोल किसने किया है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस ने किया, पब्लिक सेक्टर ने किया, और जो सेकेंडरी रोल है वो प्राइवेट सेक्टर ने किया. ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हमारा जो बूस्टअप किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो क्यों किया गया, बेसिकली वो इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर फोकस किया जाए. वो क्यों फोकस किया जाए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट एंड अ बैकवर्ड इकोनॉमी. सो इंडिया वॉज अ मेन एक्सपोर्ट, इवन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, the foreign trade was favorable to us. There was a surplus foreign trade, means exports exceeds our imports. But one thing you should kept in mind, the export, India was merely exporter of primary and raw material goods, right? And what India imports? The finished goods. Imports were not more than the exports. The reason being, India was not a rich economy, it was a stagnant and backward economy. Most of the people live in poverty. It was very difficult for them to have 3 meals a day. Fine. So that is why industrialization was focused on import substitution to produce the goods, to manufacture the goods, which or for which we have to depend on the foreign nations. Fine. So that we can save our foreign currency and we can increase the level of productivity in our economy, to increase the employment level, to generate goods indigenously, and to you can say to increase the national income or GDP of our economy. So that is why industrialization was focused on import substitution. Next comes industries were protected from foreign competition through duty and fixation of import quotas. Now in this what happens, कि government plays an important role in protecting the indigenous industries, the upcoming industries, small scale industries, from the foreign competition. Foreign competition in the sense, like what the government did, like they impose heavy taxes on imports. Heavy import duty has been taxed, have been levied on the imports, so that people should go to buy indigenous products rather than their dependence on the imported goods. So that when these goods, when the government is charging more import duty on that goods, obviously the people will like to buy less expensive goods that are indigenously produced. And the government also fixed the import quotas, like how much commodity can be exported can be imported from other nations. Okay. Then comes large scale industries are developed with the aim to build infrastructure base in our economy. सो इसमें क्या है बच्चे, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आर आना है, फॉर नहीं आएगा. व्हाट गवर्नमेंट डिड, पहले मैं आर लिख लूँ. व्हाट गवर्नमेंट डिड, कि गवर्नमेंट बिल्ड boosted the industrialization, development of large scale industries in our economy, so as to that infrastructural base is developed in our economy. Now when industries are developed, obviously the infrastructure will be developed. It leads to development of roads, bridges, highways, then you can say dams, power and electricity generation, medical facilities,
then your educational facilities, all these infrastructure facilities are improved with the improvement of large scale industries. Next comes small scale industries were developed to achieve the objectives of employment and equity. Now, IPR in 1956 or industrial policy strategy followed during planning was this to improve the small scale industries, to develop the small scale industries. Why it was so? It was so because at the time of independence, India was a stagnant and backward economy, and at that time, there was India's population was unemployed. Majority of the population was unemployed, so we were mainly dependent upon the agricultural sector, and in agricultural sector there was uh, disguised unemployment. In that case, in disguised unemployment, as you know, it is a means more workforce was there to do the work, like to do a work which for which two persons are employed are required, and that work is being done by the five workers. So if you reduce, take out three workers from that, the output will not reduce, will not be affected. So when we in the Indian economy was facing such a problem, and people, there was a disguised unemployment, labor force was, agrarian labor force was abundantly available in our economy. So what our planners decided, they decided to go ahead to develop the small scale industries, so that the employment level of the economy will increase. It will lead to increase the national income, or you can say GDP of our economy, and the equity among all the sections of the society will be achieved. So keeping this thing in mind, our planners decided to develop your small scale industries, and large scale industries were basically developed with the aim to improve the infrastructural base in our economy. So if the MCQ question or 1 mark question comes, like why large scale industries were developed, so you have to write it with the main is to improve the infrastructural बेस, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको उसको टिक करना है इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को इम्प्रूव करने के लिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया, डेवलप किया गया एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड टू हैव सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा? So this was the strategy, this was the main features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990. About today's video, if you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.